Hello everyone. Welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. Let us begin with today's decoding session of the Hindu, 1st of October 2023. From today's newspaper, we'll be discussing about three important topics. The number one is related to antibiotic resistance in the Yemen. That is because of the increasing number in the cholera epidemic. And the reason being said is the antibiotic resistance. So we'll be talking about what is this antibiotic resistance and how it actually lead to the increase in the number of the cholera epidemic. Then the second is how important is the first asteroid sample. That means this is somewhat related to the solar system. There is a mission, OSIRIS mission of the NASA. In that mission, we are collecting the sample from the Bennu. Bennu is the name of the asteroid, and ultimately we'll be knowing about the information related to the asteroid, and that will help the researchers, the scientists, to know about the other samples or the other information about the solar system. And at last, we'll be talking about the Asia's disputed water, that is the South China Sea, the most discussed topic. So we'll be having just look in a brief because we already discussed about the South China Sea dispute. Now, coming to the first topic is the gene fuel antibiotic resistance in the Yemen, the cholera epidemic. So this seems like a very difficult term. Like, what is gene? What is antibiotic resistance? What is cholera? And what is this cholera epidemic? So let's break out all the terms and let's understand that what the writer is being want to say via this news. We'll be talking about the gene. We'll be talking that what is this antibiotic resistance and what is the cholera and the epidemic. First, let's understand the term about the epidemic. In any particular region, if the number of a particular disease is increasing so in a fast way, that is the epidemic. Okay, so when we are saying the cholera epidemic, that means the number of the cases of the cholera disease is increasing in the Yemen. But now you will be talking that what is then pandemic? Like, what is the difference between the epidemic and pandemic? जब हम epidemic बोलते हैं, so that disease is prevalent. That disease is increasing only in that definite region. But when we say pandemic, that means it is spreading from more areas, from one to the other areas as well. For example, the COVID pandemic. So it was all over the globe, it was all over the world. So the term we used for that disease was the pandemic, and here we are using the epidemic. Why? Because this cholera disease is increasing in the Yemen. So we are talking about the cholera epidemic in the Yemen. So I hope this term is clear that what is epidemic. Now let's understand about the cholera. Cholera is a waterborne disease. In any examination, either you are giving the UPSC examination or you are giving the state PSC examination, that is the, or it could be of any state. Such questions are favorite of the examiners. They keep on asking, they give you four disease in the option. They'll ask you which of the following disease is a viral disease, or which of the following disease is a bacterial disease or a protozoan disease or a fungal disease. So you have to remember the causal agent of that disease. So if we talk about the cholera, okay, so cholera is a bacterial disease. The bacteria responsible for this disease is the Vibrio cholerae. This a comma-shaped bacteria. Okay, so the pathogen, or we could say the Vibrio cholerae bacteria is responsible for the causing of this disease. So the epidemic is clear, the cholera is clear, right? Now let's understand the gene, and then we'll be talking about how this gene is fueling the antibiotic resistance. Now, if we talk about the gene, suppose this is the cell of an organism. There is a living organism.
Every living organism has a cell as the basic fundamental unit of that living organism, that is the smallest fundamental unit of that living organism. In this cell, the outer covering is known as the cell wall, right? And one more covering is present inside the cell, that is your the cell membrane, which is also known as the plasma membrane. Okay, so one is your cell membrane and one is your plasma membrane, correct? So these are the outer covering of the cell. Now there was a question in the UPSC 2-3 years before that, what is the difference between a plant cell and animal cell? अगर कोई भी सेल है उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट है तो वो हो जाएगी प्लांट सेल. But if there is a cell in which only plasma membrane or cell membrane is present, that means cell wall is absent, so that would be your animal cell. So what is the difference? In the animal cell, the cell wall remains absent, and in the plant cell, the cell wall and the cell membrane both are present. Okay, so why we are talking about this? When I talk about this cell, in the center of the cell, you will find a nucleus, which is the controller of the cell, right? That is the controller of the cell, the brain of the cell, or the instructor of the cell is your nucleus. If I talk about this nucleus, how it functions, inside this nucleus, there is a genetic material present, all right? So this is your cell. Inside this cell, we are having a nucleus. We can label it as the nucleus. This is your cell, and this nucleus is the brain of the cell or the controller of the cell. Inside it, the genetic materials are present. Okay, so there is a cell. Inside the cell, there are various organelles, but in the center, you will find a nucleus, which is ultimate the brain of the cell, which is controlling the activities of the cell, which is instructing the cell. Inside this nucleus, the genetic material is present. This genetic material could be either of DNA, that is the deoxyribonucleic acid, or it could either be of the RNA, right? That means the genetic material, it could be of two types. It could be of the DNA or the RNA. When I talk about the DNA, it stands for deoxyribonucleic acid, right? And when I talk about the RNA, it is the ribonucleic acid. Both are kind of a sugars. Now, if I draw the diagram, see, I'm taking this diagram, the diagram of the genetic material, that is either the DNA or RNA outside, and I'm drawing it in a separate way. So this is your the DNA. That is the genetic material. It could either be DNA or the RNA. So what I'm trying to explain you guys is that in this DNA, small genes are present, right? So this is your DNA. In this DNA, small genes are present. Now, these genes are known as the hereditary unit. Understand the chronology. There is a cell. Inside the cell, there is a nucleus. Nucleus is a part of the cell which is containing the genetic material. In that genetic material, you will be finding the DNA or RNA as a genetic material, and they carry the genes. And these genes are the hereditary unit. That means that particle, that unit, or that factor which get transferred from one generation to the next generation. That hereditary factor is responsible for the characteristic feature of an organism. It could either be phenotype or the genotype. Phenotype means the physical appearance of an organism, that how that organism is looking, and then genotype means the internal characteristics, the behavior, the nature, everything related to the organism, right? So this is how you define the gene. That is, if I talk about the gene, genes are the hereditary unit which get transferred from one generation to the next generation, and they are responsible for showing up the characteristic features inside the living organism, either the genotype or the phenotype. Correct? Now, if you understand the gene, you can pretty well understand that what is the antibiotic resistance. Okay?
Now let's move towards the next term, that is the antibiotic resistant. रेजिस्टेंट का मतलब होता है किसी चीज को आप रेजिस्ट कर रहे हो, रोक रहे हो, यू आर स्टॉपिंग दैट थिंग टू अकर, राइट? एंड देन एंटीबायोटिक, लेट्स ब्रेक दिस टर्म इन टू पार्ट्स. एंटी मीन्स अगेंस्ट एंड बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल है, अगर वो एंटर करता है तो उसके खिलाफ ये उसके अगेंस्ट काम करता है. सो दिस इज योर एंटीबायोटिक. ठीक है, whenever we use कि हमने इस चीज के लिए एंटीबायोटिक खा ली है, ये दवाई खा ली है, राइट, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, आपने एंटीबायोटिक खा लिया मतलब जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उसके खिलाफ ये काम कर रहा है, उसके अगेंस्ट ये काम कर रहा है, दैट इज एंटीबायोटिक. अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि वो जो एंटीबायोटिक आप दवाई खा रहे हो उसको वो उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो रोक रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है. ठीक है, so this is about the antibiotic resistant. Now if you're clear with the terms, we can go on the theory of the thing, that is what is the antibiotic resistance, how the gene fueled the antibiotic resistance in the Yemen cholera epidemic. So this antibiotic resistance, that is a microbial resistance, the full form of this is your I'm sorry, this is antimicrobial resistance. तो ये कब होता है, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाउ द स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड दे मस्ट बी हैविंग प्रॉब्लम, they might be having problem with respect to these terms, so you not have to fear about it. See, micro means very small, okay, so micro here says meaning is very small, and organism is just like a living organism, correct? So that means those organisms which you cannot see by your naked eye. That means you need a microscope to see those organisms. Such organisms are known as your microorganisms, right? So when we talk about this AMR, that is the antimicrobial resistance, ये तब होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, पैरासाइट है, ये अपना पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं. अगर आप कोई दवाई ले रहे हो जो आपने इसकी जेनेटिक कंपोजिशन के हिसाब से बनाई है, तो वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या करता है, अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है. अब ये जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया, म्यूटेशन कर लिया, ब्लेंड कर दिया, तो ये जो दवाई आपने इस पहले वाले कंपोजिशन के हिसाब से बनाई थी, अब वो इस पे इफेक्ट नहीं करेगी. करेक्ट? I hope I'm making some sense. What I am saying here is, for example, आपने कोई मेडिसिन बनाई है, you have composed a medicine, and this particular medicine is effective for certain kind of genetic composition. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका पर्टिकुलर जेनेटिक कंपोजिशन है, उसके लिए जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव है. बट ये क्या कर रहे हैं, अपना जेनेटिक कंपोजिशन चेंज कर लेते हैं, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं. तो अब ये दवाई इस पे कारगर नहीं करेगी. तो इस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं कि ये रेजिस्ट कर रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो शो करता है, राइट? So they change and they are still able to grow even when they are exposed to the antimicrobial medicines that are meant to kill or limit their growth. तो एज अ रिजल्ट जो मेडिसिन है वो इनइफेक्टिव हो जाती है, इन्फेक्शन अभी भी होता है बॉडी में, और बाकी दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी वो फैल सकता है. Now let us have a look on certain amount of statistics or the data. If I compare in the complete world or the all over the globe, India is one of the largest consumers of the antibiotics in the world. पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर एंटीबायोटिक्स का कंजम्पशन है तो वो इंडिया के अंदर है. कैसे? Forget about the data. Just imagine your daily life. You're having a headache. Without consulting a doctor, you just try to get a Disprin or any other medicine. You're having cold, you go for the paracetamol. That is Ibcom or Dolo. There are many templates which you just normally take without consulting a doctor. And what happens in certain amount of time that you are having a periodic headache, right? And you start taking the Disprin. Then what happened after a few months? You're saying, no, it's not effective. Now, at least I have to take 2 medicines of the Disprin, then my headache gets cured. So that means your body is somehow resisting that. वो जो आपके पास जो आपका बॉडी है उसको रेजिस्ट कर रहा है, इसको इफेक्टिव नहीं कर पा रहा है. So these cases you can pretty well see in the India. So India is one of the largest consumer of the antibiotics in the world.
Now, if I talk about the antibiotic use, 30% जो है इसकी केसेस में, इसकी यूज में आपको ये इंक्रीमेंट देखने को मिला है पिछले, अगर सी रिपोर्ट कौन सी है यहाँ पे, रिपोर्ट का नाम यहाँ पे आएगा वर्ल्ड्स एंटीबायोटिक 2021 report, right? So that means the use of antibiotic in India has risen sharply with about a 30% increase in their per capita use during the past decade, according to the State of World's Antibiotics 2021 report. So 5 lakh people die annually due to the antibiotic resistance, antimicrobial resistance worldwide. अब क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एंटीमाइक्रोबियल जो रेजिस्टेंस है वो देखने को मिलता है? पहला जो है वो हो जाएगा आपके पास मिसयूज एंड ओवर यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर आप बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के कोई भी दवाई अपनी इच्छा से मिसयूज करके ले रहे हो, लिमिट से ज्यादा ले रहे हो, तो दैट इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर which is leading towards the antimicrobial resistance. Okay, then what is the second thing? Lack of access to the clean water. Third, sanitation and hygiene for both humans and animals, poor infection and disease prevention, control in the healthcare facilities and the farms, poor access to the quality, affordable medicines, vaccines and diagnostics, lack of awareness and knowledge, lack of enforcement of the legislation, then self-medication, genetic mutation of the bacteria. See, mutation यहाँ पे term आया है, mutation. म्यूटेशन कुछ नहीं होता है, जैसे हमने बोला ब्लेंडिंग कर लेते, ये लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है? जो जेनेटिक जीन्स है, अगर कोई पर्टिकुलर जीन्स है, या तो उसमें से एक जीन गायब हो जाती है यानी कि डिलीट हो जाती है, या एक नई जीन ऐड हो जाती है, या फिर ये इधर से उधर चले जाते हैं, यानी किसी भी तरीके का जो चेंज है उसको क्या बोला जाता है? म्यूटेशन बोला जाता है, ठीक है? तो द जीन imparting the resistance to multiple antibiotic emerge in the Vibrio cholerae bacterial strain is responsible for the ongoing Yemen cholera epidemic around 2018. तो अब यहाँ पे न्यूज कंटेक्स्ट को समझते हैं। 2018 से यमन के अंदर जो कॉलेरा एपिडेमिक हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? विब्रियो कॉलरी आपका एक बैक्टीरिया है, उसके जो जीन्स है उसमें एंटीबायोटिक एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। ओके, so these findings emphasize the importance of tracking the pathogen genomes to monitor the emergency of multi-drug resistant strain. तो यहाँ से एक्चुअली ये जो डेटा आप बता रहे हो कि 2018 के बाद से जो यमन में कॉलरा एपिडेमिक हुआ है उसके लिए मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबल है वो जीन्स में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है। यानी आपको ये चीज की समझने की जरूरत है कि ये बहुत ही ज्यादा एक इमरजेंसी की सिचुएशन है कि आप जो ड्रग बना रहे हो वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होना चाहिए, यानी एक ऐसा ड्रग होना चाहिए कि अगर वो रेजिस्टेंस भी दिखा रहे हैं तो भी वो वहां पे उसको इफेक्टिव शो कर पाए। तो कॉलेरा में जो ये आउटब्रेक है वो 2016 में चालू होता है, राइट? एंड वो म्यूटेशन की वजह से फैल रहा है। अब यहाँ पे एक नया जो प्लाज्मिड है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इस कहानी को ना सुनते हुए हम सीधा बात करते हैं प्लाज्मिड क्या होता है। वी टॉक्ड अबाउट द सेल। ये सेल है, सेल के अंदर आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज द डीएनए और द आरएनए। एक्सेप्ट इस डीएनए और आरएनए को छोड़कर कभी कभी सेल के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। आई रिपीट, व्हाट इज प्लाज्मिड? प्लाज्मिड इज योर एक्स्ट्रा chromosomal material. It is your extra chromosomal material present inside the cell. Correct? So the plasmid introduce the genes encoding the resistance to multiply clinically used antibiotics. Now, coming to the second part, एक्चुअली ये बहुत ही न्यूज जैसा कुछ दे रखा था बट उसमें से मैंने सिर्फ काम की चीज निकाली है कि जो कोरल्स है वो क्या है, आप इसको सीधा लिंक कर सकते हो जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट सेक्शन अबाउट द कोरल रीफ्स, राइट? So when we talk about the corals, first let's understand in the layman language about the coral that what is actually happening in the coral is organisms होते हैं,
ठीक है, जैसे इफ यू टॉक अबाउट द लैंड सरफेस, यू सी वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना, बहुत डाइवर्स तरीके की फ्लोरा और फौना होता है। सिमिलरली जो आपके पास ओशन है, in the ocean also you see different kinds of flora and the fauna, right? So in that fauna, in that among those organisms, आपके पास वहां पे एक organism होता है जिनका जो body है that is made up of calcium carbonate. Forget about the name of the organism. आप इतना याद रखेंगे कि उनकी जो बॉडी है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो जब उनका डेथ हो जाता है, व्हेन द लाइफ साइकिल एंड, तो पूरा बॉडी डिजोल्व हो जाता है, बट इनका जो स्केलेटन है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्केलेटन है वो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाता, और एक पूरा एक कैरियस सा जो पूरा एक बाउंड्री जो है वो बना लेता है, जिसकी वजह से एक रीफ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं रीफ, दैट इज ऑफ द कोरल reef, right? So that reef is because of the coral reef. So the oceanic coral reefs are made up of the communities of tiny living things. They are the subaquatic corals, the polyp-based structures that calcium carbonate holds together. So just 0.1% of the ocean surface is occupied by the coral reef. यानी पूरा ओशन है उसका मात्र 0.1% कोरल रीफ जो है वो ऑक्यूपाई करता है, which are also known as the tropical rain forest of the sea. पूरे ओशन में जो 0.1% एरिया जहां पे कोरल रीफ देखने को मिलता है उसको बोला जाता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी, एंड इट हैबिटेट फॉर 25% ऑफ द मरीन स्पीशीज। यूजुअली क्या होता है, ये आपका ओशन है, इसकी हार्डली बहुत ही शेलो सी डेप्थ यानी कि 150 फीट के अंदर अंदर आपको कोरल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, बट देयर इज वेरी रेयर केस, बहुत ही कम केस होता है कि जब आपको डेप्थ में भी मिलते हैं, दैट इज अराउंड 450 फीट। दैट मीन्स corals are present in ये prelims point of view से statement काफी important हो जाते हैं, that corals are present at a shallow depth of the ocean around 150, but there are certain exceptions में कभी कभी 450 तक भी आपको ये देखने के लिए मिलेगा। So the individual corals that are located on the calcium carbonate exoskeleton are known as the coral polyps. Different types of coral reefs, आपको broadly तीन तरीके की coral reef मिलता है, एक है fringing reef, the barrier reef and the atoll. So there are three types of the coral reefs. Fringing reef is there, the barrier reef is there, and the atolls are there. If I talk about the fringing reef, आपने ये पढ़ा होगा, ये कोस्टलाइन है, कोस्टलाइन के पास में जो कोरल रीफ इमर्ज होते हैं उनको हम फ्रिंजिंग बोलते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की चारों तरफ ऑफशोर पे है वो बैरियर रीफ होते हैं, और जो मिड ओशनिक रिज होता है वहां पे आपके पास एटॉल होता है। अगर ये टर्म्स आपको नहीं पता है, मिड ओशनिक रिज क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, आप हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन है उसकी जो वीडियोस है उसमें ये टर्म्स आप देख सकते हैं, उसमें इसके बारे में डिटेल में बताया गया। बट अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि हमने कहा इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी बोलता है, और वहां पे हैबिटेट करता है ये मरीन इकोसिस्टम का, काफी मरीन इकोसिस्टम जो इस पर डिपेंड होता है। नाउ coming to the, that's it for the corals. Now we'll be talking next about the asteroid sample. First, look at this diagram. If I talk about this diagram, that is the Osiris Rex mission से related एक diagram है. This is your sun. We know that the planets revolve, मतलब चक्कर लगाते हैं सन के चारों तरफ। तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं कि मरकरी है, देन वीनस, देन योर अर्थ, और फिर यहाँ पे अर्थ और जुपिटर के बीच में आपको एक बड़ा सा एस्टेरॉइड जो बेल्ट है वो दिखेगा। एस्टेरॉइड एक पत्थर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ए रॉक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ठीक प्लैनेट की तरह ही सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और आपका जो एस्टेरॉइड है वो काफी अलग अलग तरीके से होता है। ब्रॉडली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एस्टेरॉइड, उसमें से एक होते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड जो कि अर्थ के काफी पास में होते हैं, उसी में से एक एस्टेरॉइड का नाम है बेन। तो ये आपके पास जो मिशन है दैट इज द ओसिरिस रेक्स मिशन, ये बेनो जो एस्टेरॉइड है उसके सरफेस पे जाके इसका सैंपल लेके वापस अर्थ सरफेस पे लौटना है, और ये हमारा कंप्लीट मिशन है। सिंपल,
दैट बेनू जो एस्टेरॉइड है उसकी सरफेस पे जाना है, उसका सैंपल कलेक्ट करना है, अर्थ पे आना है और हम उसको स्टडी करेंगे. स्टडी क्यों करेंगे? क्योंकि उससे काफी ज्यादा हमको हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टैंड अबाउट द सोलर सिस्टम एज वेल. राइट. सो व्हाट वाज द ओजिरिक्स मिशन? 2016 में ये मिशन जो है वो स्टार्ट हुआ था और अभी 2 साल तक 2018 में वो टारगेट पे पहुंचा और अब जाके वो जो है लैंड कर चुका है, इसीलिए ये न्यूज पे. बट आपको उसको पढ़ने की जरूरत क्यों है? देखो सिंपली से हम बोल सकते हैं बिकॉज इसका जो स्ट्रक्चर है ये काफी टाइम से अनडिस्टर्ब है, यू कैन से. So that is the reason if you study about it, so you will definitely know about the solar system because ये उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा solar system है, right? So can we mine the asteroid? So apart from the planetary security in the origin of life, asteroid is possibility of mining. उसको mine भी आप कर सकते हो, इसलिए भी इसको पढ़ा जाता है. ठीक है. Now next is about the Asia's disputed war, that is the South China Sea. हम इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं करेंगे आज की वीडियो में क्योंकि ये मैं पहले 3 बार कवर करा चुकी हूँ कि साउथ चाइना जो सी है इसका डिस्प्यूट किस चीज को लेके है. So today you will be writing a question on the basis of this topic that critically examine. You will be talking that critically examine the impact of disputes happening due to South China Sea on the globe or the world, and what is India's stance over it. Okay, so that's it for today. Thank you so much.